Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today's date 12th January 2021. Standard 7th subject Science. Chapter number 8 Winds, Storms and Cyclones. Okay, here the three words. What is winds? What is storms? And what is cyclones? We already completed this chapter in textbook. Okay, this is very interesting chapter. So first we have completed fill in the blanks. So let's start. First, wind is blank air. So answer is moving. Wind is moving air. Write down this answer in fill-ups. Moving. Winds is moving air. Okay. These fill-ups also ask one-word questions. What is wind? So we write wind is moving air. B. Winds are generated due to blank hitting on the earth. So answer आएगा winds are generated due to uneven hitting on the earth. क्या आंसर आएगा? Uneven hitting on the earth. C. Near the earth's surface, blank air rises up wherever blank air comes down. So answer होगा near the earth's surface, warm air rises up wherever cold air comes down. क्या आंसर आएगा? Cold air comes down. D. Air moves from a region of blank pressure to a region of blank pressure. Air moves from a region of blank pressure to a region of blank pressure. So answer आएगा air moves from a region of high pressure to a region of low pressure. Okay? एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जो है वो मूवमेंट करती है. ठीक है. Question number 2. Suggest two methods to find out wind direction at a given place. Suggest two method. हमें ऐसी दो मेथड जो है वो डिस्क्राइब करनी है कि जिसमें जो है वो विंड की डायरेक्शन वो जो है वो गिवन प्लेस पे जो जा सकती है. सो द फॉलोइंग आर द टू मेथड्स to find out the direction of wind. First, while flying a kite, air exerts pressure on the kite due to which the kite flies. Okay, while flying a kite, suppose जब हम पतंग चगाते हैं, अभी तो उत्तरायण आ रही है ना, सब लोग पतंग चगाएंगे. ठीक है. While flying a kite, तो आप ये जो है वो एक्सपीरियंस करना. While flying a kite, air exerts pressure on the kite due to which the kite flies. The direction of which the kite flies is the direction of blowing of wind. Second,
While riding a bicycle, the direction in which it is difficult to ride is opposite to the direction of the blowing wind. While riding a bicycle, आप bicycle जब चलाते हो, while riding a bicycle, the direction in which it is difficult to ride is opposite to the direction of the blowing wind. Therefore, while flying a kite or riding a bicycle, the wind direction at given place can be determined. Okay? ये दोनों केस जो है उसमें ऐसा होता है. कौन से केस है? फ्लाइंग अ काइट और राइडिंग अ बाइसिकल. दोनों केस में सेम ही पोजीशंस है. जो एयर है वो आगे से ब्लो होती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. State 2 experience that made you think that air exerts pressure other than those given in the text. So answer, we have experienced that when we blow a balloon, the balloon becomes tight. If we try to fill more air, then the balloon will burst after an extent. This happens because air exerts pressure. Okay, we have experienced that हम ऐसा कर सकते हैं. We have also experienced the movement of fringes of windows and doors of our houses when wind blows in a high speed. This also happens because air exerts pressure. Okay, we have also experienced, हम ऐसा experience करते हैं. We have also experienced the movement of fringes of windows and doors of our houses when wind blows in a high speed. This also happens because air exerts pressure. ऐसा हो सकता है. Question number 4. You want to buy a house. आपको house purchase करना है. Would you like to buy a house having windows but not ventilators? Explain your answers. Okay, आपको हाउस बाय करना है तो आपको ऐसा हाउस पसंद आएगा जिसमें विंडो है बट वेंटिलेटर्स नहीं है. So answer, a house having windows but no ventilators should not be bought. हम ऐसा हाउस नहीं खरीदेंगे जिसमें विंडोज तो है बट वेंटिलेशन जो है वो नहीं है. दिस इज बिकॉज वार्म एयर is lighter than cold air and therefore it goes up. This warm air can go outside the house mostly through ventilators. If there are no ventilators, then the warm air cannot go outside easily. Suppose ventilators ही नहीं होंगे तो जो है वार्म एयर जो है वो आउटसाइड इजीली नहीं जा सकती है. ओके, यही इसका रीज़न है. A house having windows but no ventilators should not be bought. This is because warm air is lighter than cold air and therefore it goes up. This warm air can go outside the house mostly through ventilators. If there are no ventilators, then the warm air cannot go outside easily. हम ऐसा नहीं कर सकते हैं.
Question number 5. Explain why holes are made in hanging banners and hoardings. क्यों हमें जो है वो होल्स करने पड़ते हैं. सपोज कोई हैंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स जब हैंग करते हैं, जब उसको लगाते हैं, तो वाई होल्स आर मेड, क्यों होल लगाने पड़ते हैं. सो आंसर्स: एयर एक्सर्ट्स प्रेशर्स. विंड ब्लोइंग इन हाई स्पीड में ब्रेक और डिस्प्लेस मैनी थिंग्स. जब बहुत तेज़ हवा आती है हाई स्पीड से, तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो ब्रेकअप कर देती है. इफ़ होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स, देन एयर कैन पास थ्रू दिस होल्स. ओके, एयर जो है वो ऐसे होल में से पास होती है. विच रिड्यूसेस द एयर प्रेशर. उससे क्या होता है, एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है. विच रिड्यूसेस द एयर प्रेशर exerted on the banners and hoardings. That's why holes are made in hanging banners and hoardings. ओके, इसीलिए तो जो है वो होल्स किए जाते हैं. दैट्स वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ विल यू हेल्प योर नेबर इन केस साइक्लोन अप्रोचेस योर विलेज और टाउन. ओके, आप अपने नेबर्स को कैसे हेल्प करोगे. हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस cyclone approaches your village and town. So in case of cyclone approaches, the neighbor should be helped in the following ways. हम ऐसे उसकी हेल्प करेंगे. हाँ, फर्स्ट, in case cyclone approaches, the neighbors should be helped in the following ways. First, by helping in moving to cyclone shelters and other safer places. हमें क्या करना है, सपोज साइक्लोन आए तो हमें उसकी हेल्प करनी है. उनको शेल्टर में ले जाना है, उनको घर प्रोवाइड करना है, और या अदर जो ऐसे सेफ प्लेस होते हैं वहाँ पे उनको ले जाना चाहिए जब साइक्लोन आता है तब. देन सेकेंड, बाय आस्किंग देम टू टेक नेसेसरी स्टेप्स to shift animals, vehicles and household goods to safer places. उनको बोलना चाहिए कि उसके बाद आपको एक स्टेप ऐसा लेना चाहिए कि जो है वो एनिमल्स जो है उनको शिफ्ट करना चाहिए, उनके व्हीकल्स शिफ्ट करने चाहिए, एंड जो हाउस होल्ड गुड्स है उसको भी उनको जो है वो सेफ जगह पे पहुंचाना चाहिए. थर्ड नंबर है, बाय कॉलिंग द इमरजेंसी सर्विसेज सच एज पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स व्हेन रिक्वायर्ड. क्या करना चाहिए, उनको कॉल करना चाहिए. इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी कॉल करना चाहिए. बाय कॉलिंग द इमरजेंसी सर्विसेज सच एज police, fire brigade and medical centers when required. मेडिकल सेंटर्स पे ले जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशंस क्रिएटेड बाय अ साइक्लोन. कौन सा एडवांस प्लान होना चाहिए जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए. ओके, तो हमें क्या जो है वो एडवांस प्लान रखना चाहिए. सो द फॉलोइंग प्लानिंग इज रिक्वायर्ड to deal
with the situation created by a cyclone. फर्स्ट है facilities for cyclone predictions and forecasting, which can give cyclone warning in advance. क्या करना चाहिए हमें? इसकी फैसिलिटी ऑफ साइक्लोन प्रिडिक्शंस, ऐसी हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए कि साइक्लोन आने वाला हो तो हमें पता चल जाए. एंड फोरकास्टिंग, न्यूज़ में उसमें हमें बताना चाहिए. विच कैन गिव साइक्लोन वार्निंग इन एडवांस. जिससे क्या होता है, ये साइक्लोन आने वाला है उसकी हमें वार्निंग एडवांस में मिल जाती है. ओके. सेकंड, क्विक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. Quick informations and communications linkages so that information can be spread quickly. क्विक इंफॉर्मेशन जैसे लिंक प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना. कम्युनिकेशन, मोबाइल में बार बार ऐसी जो है वो लिंक है वो हमें सेंड करनी चाहिए, जिससे फटाफट वो स्प्रेड हो जाता है, क्विकली स्प्रेड हो जाता है कि साइक्लोन में भी ऑकर. Constructions of cyclone shelters and arrangement for moving people to safer places for safety during cyclone. क्या करना चाहिए हमें? कंस्ट्रक्शंस ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स, ऐसे शेल्टर्स फटाफट रेडी कर देने चाहिए. और जो हमें ऐसी अरेंजमेंट करनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे पीपल हैं उनको क्या करना चाहिए, सेफ़र प्लेसेस में उनको पहुंचाना चाहिए. ओके, टू सेफ्टी ड्यूरिंग द साइक्लोन, सेफर प्लेस में उनको पहुंचाना चाहिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 and 9 both are MCQ. This is the true or false. Okay. Which of the following places is unlikely to be affected by a cyclone? Okay, which of the following places? फर्स्ट है चेन्नई, सेकंड है मैंगलोर, थर्ड है अमृतसर और फोर्थ है पुरी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन. तो क्या आंसर आएगा? अमृतसर. ओके, अमृतसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट. कौन से स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है? फर्स्ट है इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टू ओशियन. विंटर में ऐसा होता है? यस, करेक्ट. इन विंटर the winds flow from the land to the ocean. This is called land breeze. इसको हम क्या बोलते हैं? land breeze. ऐसा जो है वो विंटर में होता है. सेकेंड, इन समर the winds flow from the land towards the ocean. So it is not correct. Summer में क्या होता है? In summer the winds flow from the ocean towards the land. This is called sea breeze. जिसको हम क्या कहते हैं? sea breeze कहते हैं. ओके. थर्ड जो है, a cyclone is formed by a very high pressure system with very high speed winds revolving around it. तो not correct. A cyclone is formed by a very low pressure system with very high speed winds revolving around it.
The low pressure region is called the eye of the cyclone. And last, fourth number, the coastline of India is not vulnerable to cyclones. This is not correct. The coastline of India is very vulnerable to the cyclone. Okay student, आज के वीडियो में इतना ही. Thank you.